No. Yes, sir. I'm not able to practice. Error? Error. Account is currently disabled. Oh, okay. Then you need to check with Manika ma'am. Manika. Yeah. Already forwarded, sir, but no reply. Then call her. Okay. Must be disabled. Means must be expired. Okay. Can you see my screen? Yes, sir. Sir. Okay. So yeah, so we'll continue with RF. Okay, RF stand for remote frequency. Okay. So basically, to speed up the process, right? In warehouse, we use this one. Okay, so there are different RF devices. Okay, so this one is called truck mounted device. These two, like जो ट्रक वगैरह होते हैं, right? फोर्कलिफ्ट ये, तो उसमें ये यूज किया जाता है, right? इसमें मेनली टच स्क्रीन होता है, बिकॉज लाइक obviously they cannot बटन टूट जाएगा, that the reason, right? And normal इसमें फिर ये वाला यूज होता है. Okay, and then in RF में एक सबसे बड़ा इशू ये है कि like is also required an infrastructure. Okay, infrastructure means Wi-Fi, right? Because it's only work, मतलब Wi-Fi का setup चाहिए, modem वगैरह वो सब चीजें, right? And then normally we always recommend, okay, to first go with the system. अगर means while implementation, okay, we always recommend them to go with the system first, okay, and then switch to RF step by step, process by process. Okay, then इसमें बहुत सारे players, मतलब जो device बनाते हैं, right? Honeywell are like, you can say, the leader, right? Zebra is also there, and then normally cost of this device is around 1 lakh, एक device. Okay, but yeah, it's very useful. So difference क्या है ना? So normally अगर warehouse में हमें कुछ activity करनी है, right? Putaway और stock removal, right? हम कैसे करते हैं सिस्टम में और फिजिकली, दैट लेट्स से अगर ये स्टेजिंग एरिया है, राइट, ये वाला फॉर एग्जांपल, और ये फाइनल बीन है, तो समवन नीड टू मूव मटेरियल फ्रॉम हियर टू हियर, राइट? एंड आफ्टर मूवमेंट they need to go to the system and they need to confirm that, right? They need to confirm the like the movement. But in RF, right, they can directly confirm on the spot. मतलब जैसे ही वो स्कैन करेंगे, ओके, लाइक दिस, जैसे वो स्कैन करेंगे वो टास्क कंफर्म हो जाएगा, वो वेयरहाउस टास्क कंफर्म हो जाएगा. Okay, and then which last session we have checked one transaction SCWM user, right? So ये कौन सा गया हमारा, this one, right? 7500 only, right? Our warehouse. Let me check once. Yeah, okay. Then so transaction for RF / SCWM, मतलब हम जो RF को जो है ना सिस्टम में भी ओपन कर सकते हैं, SCWM RF UI. Okay, डिवाइस में ओपन करने के लिए we need to set up device first of all. Then ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सो इट रिक्वायर्ड ब्राउजर, स्पेसिफिक ब्राउजर, वेलोसिटी ब्राउजर या जेब्रा के भी आते हैं, हनीवेल के भी आते हैं, राइट? एंड देन वी नीड टू प्रोवाइड देम अ लिंक, राइट? सो लिंक का जो मतलब लिंक का जो भी कुछ काम है, दैट वी नीड टू चेक विद बेसिस. बेसिस विल क्रिएट द लिंक, राइट? एंड देन वी कैन प्रोवाइड देम.
Obviously we cannot check, so we'll check over here only in system, right? So warehouse resource, if you press enter, so these are the okay process. Now मुझे enter करना पड़ा, okay? Why? Because this is untick, right? If I tick this one, which is at a logon, okay, and here just for time beam I will maintain star star entry. We'll discuss what about this star star. Okay, now again if you open RF, you can see it's directly open, means जो at a logon है system will logged in directly. Okay, then here you can see the process, right? System guided, manual selection, inbound, outbound, internal. Okay, so for example, if you go with manual selection, so here you can see there are options by warehouse order, HU or warehouse task request, right? So you cannot use back button first of all over here, right? See, so you have to use function key F1, F2, this one. So for back, F7 is used. Okay, F7 is for back, right? Then we'll see the system guided means nothing but the queue. You can see yesterday also, like in previous session also we have checked this, right? The queue. So so if you select it, if you click over here selection by selection, right? So there is no any queue is available or assigned or the active warehouse task. That's the reason we are getting this error. And then to see this error in detail, you can press F9. Okay, see like this. Okay, and yeah, if you are planning to do certification, this like this also asks in certification exam the function key. Okay, so what do you do? Simply go SAP EWM RF. So always check SAP portal के ऊपर current function key क्या है. Normally यही है, like F5 is for more, F6 for clear, back for F7, list F8, full message F9. Okay, normally question ऐसा पूछा जा सकता है कि for back button what is the function key, which is F7. Okay, and these are the standard, and then this function key are applicable for all RF screen. Okay, then now फिर ये RF का जो config है, right? What about that? So if you press Control Shift F1, okay, Control Shift F1. So here you can see one window, okay, one pop-up window, right, or dialog box you can say. So here you will see all the technical information. For example, if I go in inbound process, right, so Control Shift F1, right, so is RF menu and then logical transaction and this thing. For example, if we go again HU, for example, Control Shift F1, Control Shift F1. Control Shift, why my function key is not working? Okay, sorry. Control Shift. Yeah. Okay, so every screen have their own logical transaction. ये जो logical transaction है, यही इसका आप बोल सकते हो कि pillar है. Yeah, you can say with the logical transaction only, you can change all the configuration. Right. अब इसका configuration, now why we able to see all the function, right? Because there is an profile which is already maintained star star. So as I, if you remember, right, मैंने एक चीज बताया थी, star means default, means for all the warehouse, right? What if you want to create for your specific warehouse? So if you go to the SP arrow, okay, here you can see mobile data entry. So SCP ने एक all together different node provide किए, right? Then here, so first of all, here you can see assign presentation profile. But what is presentation profile? Okay, so if you go here in RF, okay, define step in logical transaction.
So basically there are three things: presentation profile, personalized profile, and device profile. Okay, so first of all, the presentation profile. So presentation profile जो होता है ये होता है for warehouse. Means you can control, for example, अगर किसी warehouse में replenishment है ही नहीं, right? So then will not assign that replenishment the screen, right? And then yes, please do not change anything in standard, which is star star star, right? So here you can create, right? Then now if you check in user, okay, user में मैंने क्या किया है, ये जो पर्सनलाइज प्रोफाइल है यहाँ पे मैंने स्टार स्टार एंट्री मेंटेन की थी, राइट? नाउ व्हाई स्टार स्टार, राइट? और ये क्या होता है? नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से 45 यूजर इज ओनली अलाउड टू डू इनबाउंड रिलेटेड ट्रांजैक्शन, okay, only inbound related transaction. So further in the presentation profile, right, in personalized profile we can, you can see over here in and out, means inbound and outbound. So that user is only allowed to see inbound or outbound if you assign respective, let's say, this presentation profile, sorry, personalized profile to that user in user ID. Clear? Hello? Yeah, the clear है? पर्सनलाइजेशन मतलब सर वॉइस की So for तरह कंफर्म कर सकते हैं? नहीं. So yeah, pick by voice is just another, you can say the upgraded version. So ये pick by voice is like अभी कैसा आ रहा है ना, ये भी एक्चुअली इंडिया में यूज हो रहा है आरएफ, बट फॉरेन में ना दैट इज समथिंग कॉल्ड पिक बाय वॉइस और पिक बाय लाइट। ओके, ये दोनों भी चीजें यूज की जाती है। तो व्हाट इज पिक बाय वॉइस? ओके, ऐसे हेडफोन होते हैं, हाँ हाँ ओके, एंड देन दैट सिस्टम विल से ओके गो एंड पिक। जैसे ही वो कंफर्म कर देगा पिक्ड, तो वो टास्क कंफर्म हो जाएगा। नो नीड टू स्कैन, ओनली वर्ड इज पिक। ओके, देन पिक बाय लाइट। ओके, पिक बाय लाइट में क्या होता है ना, यहाँ पे सेंसर होते हैं लाइक दिस, ओके, ये वाले सेंसर। तो कैसा होता है ना, ये पूरा कन्वेयर सिस्टम है ऑटोमेटिक। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटो स्टोर इन ईडब्ल्यूएम, मींस नॉट इन ईडब्ल्यूएम, इज एक्चुअली डिफरेंट कंसेप्ट, और मिनी लोड कन्वेयर। ओके, मैं वो दिखा लेता हूँ। बट मिनी लोड कन्वेयर में तो इट्स विल बी क्रेन एक्चुअली। लेट्स से यहाँ से मटेरियल निकाला सिस्टम ने, ओके, दिस कॉल्ड मिनी लोड कन्वेयर, राइट? तो ये इसमें का दो ही पीस डिस्पैच करना है एक्चुअली, राइट? बट ऑब्वियसली यहाँ पे तो मशीन है, तो वो क्या करता है, वो पूरा बॉक्स है ना यहाँ पे आके रखता है, ओके, जो हमने यहाँ पे देखा था ये वाले स्टेशन पे, राइट? तो इसको ना साइड पे हाँ सेंसर होते हैं, राइट? तो जैसे ही यहाँ पे जो भी बंदा है, पिकर है, राइट, वैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ये छोटा पिक्स है, वैसे ही वो मटेरियल निकालेगा ना, तो ये सेंसर जो है ना वो पिक करेगा कि दो मटेरियल निकाले हुए हैं, या मैन्युअली भी वो डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो मूवमेंट से वो निकाल देगा, राइट? तो ये भी यूज किया जाता है, बट ये इज एडवांस फंक्शनैलिटी विच रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, और ये आरएफ से भी कॉस्टली है, राइट? बिकॉज हर एक इसको आपको सेंसर लगाना है, राइट? तो वेयर हाउस के जो पर्सनलाइजेशन होते हैं वो इसमें करते हैं हम, यस, आरएफ के पर्सनलाइजेशन हो। या सो प्रेजेंटेशन प्रोफाइल वेयरहाउस को अभी देखिए स्टार स्टार ही क्यों, अभी इसमें भी कैसा है ना, स्टार स्टार मतलब इसमें सब प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइन है, राइट? सो वो ऑलरेडी यहाँ पे असाइन हो चुका है। इफ यू गो टू द असाइन प्रेजेंटेशन प्रोफाइल टू वेयरहाउस, तो यू विल सी जो हमारा वेयरहाउस जो है 7500, उसके लिए स्टार स्टार ऑलरेडी मेंटेन है। अगर मैं ये निकाल दूँ,
या दूसरा कौन सा भी रैंडमली सेव कर दूं, ZYPI. Okay, now if you open again RF, तो okay, सेम ही है, मतलब जो लेआउट होगा. फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेम्बर, हमारा जो मॉनिटर का जो है SAP स्टैंडर्ड, राइट, याद है, हमने फिर बाद में एक बनाया था. ये सब इन्होंने खाली जस्ट कॉपी किया है. बट इफ यू रिमेम्बर इन मॉनिटर हम क्या यूज कर रहे थे, SAP, राइट. बट इफ यू मेंटेन फॉर एग्जांपल दिस वन, ओके दिस इज नॉट फॉर आवर वेयरहाउस 75 के लिए हमने नहीं किया था क्या. ओके लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस. तो इसमें तीन ही ऑप्शन है, हाँ 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 हाँ. राइट. तो ये हम इसमें भी कर सकते हैं. विल नॉट नीड टू लाइक लेट्स से अगर उनके पास ये दो इंटरनल प्रोसेस है ही नहीं, सो विल ओनली प्रोवाइड मैनुअल इनबाउंड एंड आउटबाउंड लाइक दिस. तो वो गलती से भी कुछ चीजें और ओपन ना करे. ओके, लाइक दैट वी कैन कंट्रोल. और उसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन प्रोफाइल, और जो यूजर को असाइन किया जाता है. अभी जो पूरे जो प्रोसेस हो गए, राइट, इनबाउंड आउटबाउंड, वो तो वेयरहाउस लेवल को हो गए, बराबर. बट यूजर स्पेसिफिक जो हो गए, राइट, एक स्पेसिफिक यूजर को इनबाउंड वाला ही एक्सेस देना है, राइट. तो उसके लिए हम ये जो पर्सनलाइज प्रोफाइल है ना, वो हम मेंटेन करेंगे, इन और आउट. इसमें अगेन स्टार रिप्रेजेंट ऑल दी प्रोसेस. क्लियर क्लियर सर. नाउ. ये फिर मेंटेन कहाँ पे करना है, सेकेंड क्वेश्चन, राइट. ये स्टार स्टार वाली एंट्री तो है, बट ये कहाँ पे है, मुझे अगर नया क्रिएट करना है तो फिर मैं कहाँ पे जाके करूंगा, राइट. सो फॉर दैट इफ यू गो टू दी हियर लॉजिकल ट्रांजैक्शन, राइट. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल you need to, let's say if I go unloading, right, random transaction control shift F1. Okay, we want actually a specific transaction control shift F1, right. So मैं इसको कॉपी करता हूँ, ULDLSI लॉजिकल ट्रांजैक्शन. ओके, लॉजिकल ट्रांजैक्शन में जाके मैं सर्च करता हूँ. ओके, ULD, select this. ओके, देन इसमें अंदर जितने भी कॉन्फ़िग है स्टार स्टार के लिए मेंटेन है, राइट. तो ये आपको आपके जो वेयरहाउस आपने जो प्रेजेंटेशन प्रोफाइल मेंटेन किया है उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, और जो यूजर स्पेसिफिक जो है पर्सनलाइज प्रोफाइल उसके लिए भी मेंटेन करना पड़ेगा. बट फिलहाल दिस इज अ टेस्ट सिस्टम, दैट द रीजन यू कैन सी इज स्टार, so it will applicable for all. Clear? क्लियर सर. Okay. और फिर यहाँ पे फिर अलग अलग लाइक डिस्क्रिप्शन क्या कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, दैट वी मेंटेन फ्लो. क्योंकि उसके पीछे ये लाइक वेन एवर यू वांट टू चेंज एनीथिंग इन RF, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट जाके कॉन्फ़िग करेंगे, वी आल्सो नीड हेल्प फ्रॉम टेक्निकल कंसल्टेंट. ओके, so with the help of that we can only do it, because we don't know what is a functional module and this thing, and no one going to ask you about this. Okay, इसमें जो मेन चीज जो है, right, so that is this function code profile that we'll see, right. इसमें ये पुश बटन है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये हम ये प्रैक्टिस करेंगे इसका, टू चेंज एंड टू डिस्प्ले कैसे करना है. ओके, क्लियर है यहाँ तक. यस सर. नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे मेनू में ये ब्लैंक है, राइट. यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, राइट. एक्चुअली ये क्यों दिया है ना, ये जो नंबर है 010203 मैं यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ 01, तो वो वहाँ पे चला जाएगा, राइट. सो शॉर्टकट भी हम कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 010101. okay, why it is not going to 1. ओके, उसको ऑर्डर नहीं मिल रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल क्या था हमारा 0311 डायरेक्ट डिलीवरी. क्यों 03 डाला पहले मैंने, राइट, फिर 1 फिर 1.
सो 01 में जाके उसने ये 1 उठाया और उसके अंदर ये 1 डिलीवरी, तो ये शॉर्टकट है। ओके, मतलब 030101 ने डाला तो नहीं आएगा क्या सर? 030101 0101 नो, क्योंकि 0 की ये नहीं है, राइट, वैल्यू नहीं है। So if even if you just enter 1, it will open the same screen. But 0 मतलब वो पहले वैल्यू देख रहा है 0, राइट, तो 0 का तो कुछ है नहीं। सेम वे 03 2 सी 2। ओके, यस सर, समझ गए। नाउ फॉर एग्जांपल /n/SAWM/PRDI. So sorry, RF में आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हर एक स्क्रीन चेक करनी है। ओके, क्योंकि हम तो सब चेक नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। ओके, सो ओके, only thing is that we need an HU. Okay, HU is there, so I will copy this delivery. So हमने PSC में देखा था कि फॉर अनलोडिंग, अगर मुझे अनलोडिंग ट्रेस करना है, राइट, या करना है मैन्युअली या सिस्टम में, तो मुझे वो टास्क बनाना पड़ेगा, राइट, डोर वाला। बट RF में हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? go to the RF inbound process, unloading by ASN or delivery, will go with delivery. Okay, enter delivery number, तो वो चेक करेगा। ओके, सो ये अभी यहाँ पे पूछ रहा है HU, राइट, so you can create new HU, or if you press F1, so there are two HU, 53 and 54. If you check, see 53 and 54, right, तो मैं कॉपी करता हूँ, राइट, will go back, enter this HU, 53 enter किया, okay, 54, okay, so there is some issue. We need to have one new delivery. Okay, it's not yet completed. Let's create new delivery. ये जो क्रिएट करना था, ठीक है, विल डू ओवर देयर। ओके, नो SMQ2, document type, oh my god, what is this? No document type from the system, ये कौन सी डॉक्यूमेंट टाइप आ गई? ELST, why they change, understand. क्या डॉक्यूमेंट टाइप होना चाहिए?
किसी को याद है? Should be EL and ELN. This ELN तो दिख रही नहीं है, डिलीट कर दी कि क्या? STQ क्रिएट करके रखा है. Okay, we are not means we are okay with that document type, so let it configure. तो ये आपका ये एक हो जाएगा कि कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, राइट? वी डोंट केयर कि क्या किया है, someone just change it so it's fine, we don't care. Because it's in standard SAP just EL and ELN instead of that. Okay, yes, in S4 side और ERP side उसका impact है movement type के ऊपर, मतलब जो good receive हम करते हैं, right? But now we are in our final stage, so we don't care कि क्या movement type trigger और क्या. Okay, so general setting मैंने ये is in delivery processing. Okay, map document, I will copy this one. Okay, so we'll go to the header station, so it's ELST. तो क्या हमारा ELST. Okay, save it. Okay, and then for item simply copy this ELST. ये भी ELST I guess, right? Yeah, ELST. Okay, save it. Oh, still भी क्या रह गया? SAP 2. Okay, so it's just slow. Okay, so it's there. Now we'll try to pack, right? Because packing is important. Now okay, so we'll create two packaging. This into this into this. Okay, save it. Okay, now we'll try to unload from RF /VL31N. Oh, sorry, WM RF UI. Okay, inbound unloading by delivery. /41. Let me just close all other window. No task exit. Why it is required task? There is task is not needed. F9. 42. Which we are missing some configuration. Let me check. But yeah, उसके लिए तो कुछ नहीं चाहिए.
unloading RF. So WPT. So 999 or okay, again we'll try. $95.51. Okay, why it is giving this error? There is nothing to do with task. Actually unloading होना चाहिए था. Seven five zero zero. ओके मैं ये देखता हूँ. एक्चुअली इसका तो ऐसा होना नहीं चाहिए. सो ये अनलोडिंग उसने करना चाहिए. ओके. Then there is no any other error प्लस सर also. हम RF यूज करके अनलोडिंग करना चाहते हैं ना. यस यस. चेक कर दो ये क्यों नहीं चल रहा है. ओके. ठीक है सर. इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट कि हमारा मटेरियल कहाँ पे है. और एल्स लाइक वी कैन क्रिएट टास्क. ये भी हम आरएफ से कर सकते हैं. राइट. बट या इफ रिमेंबर इसके लिए क्यू चाहिए. राइट. नाउ ओके विल क्रिएट प्लस सेव. Oh, it's taking so much time. Okay. Now confirmation. तो जब ये नॉर्मली कैसा होता है ना, वेयरहाउस के जो सुपरवाइजर होते हैं. राइट. सो मॉर्निंग में वो सबको असाइन कर देते हैं क्यू वगैरह. राइट. क्यू एंड रिसोर्स वो असाइन कर देते हैं. बट नाउ हियर हमें हर एक मास्टर डेटा मेंटेन करना पड़ेगा. यू कैन डायरेक्टली बाईपास मींस यू कैन डायरेक्टली मेंटेन रिसोर्स ओवर हियर. ओके जस्ट सेव इट. अदरवाइज वो आरएफ से कंफर्म करने नहीं देगा, एरर दे देगा. ओके. देन अभी आरएफ में भी कंफर्म करने के लिए वी हैव डिफरेंट ऑप्शन. एक ही प्रोसेस करने के लिए यू कैन गो बाय सिस्टम गाइडेड. यहाँ पे हम क्यू डाल सकते हैं और बाय सिलेक्शन. ओके क्यू तो असाइन हुई है. क्यू और ये दोनों असाइन है. देन व्हाई इट इज नॉट वर्किंग. Okay, we'll go back. Manual selection, warehouse order. Okay, that is strange. ये बोल रहा है ऑर्डर ही नहीं है. Okay, let me check once RF.
क्या क्यों नहीं हो रहा है? ओके ओके सर। बट या इसमें तो कुछ है नहीं, और ट्रांजैक्शन तो होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट टाइप का तो कुछ एरर है नहीं उसमें। बढ़िया, जैसे हम आरएफ से करेंगे ना तो ये सब डेटा कंफर्म हो जाएगा, डेट टाइम कंफर्म बाय किसने किया है, सब चीज़ें। ओके ठीक है सर। या आरएफ के लिए ये देयर इज समथिंग टेक्निकल बुक आया है, और ऑब्वियसली टेक्निकल में इतना कुछ तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बट या आपको फ्यूचर में काम आ सकती है, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा बाद में। ओके और विल आल्सो डिस्कस व्हाट अबाउट दिस फंक्शन की उसको कैसे चेंज करना है वो आरएफ में नेक्स्ट सेशन में। ओके प्लीज़ प्लीज़ आप ठीक है सबको सर। मैसेज भेज दीजिए, आपके फ्रेंड को प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, तो हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। हाँ। यस। ओके ठीक है सर। ओके देन विल स्टॉप। थैंक यू फॉर ओके सर। joining. Bye. थैंक यू सर, थैंक यू।